types. And fungi is a multicellular. It has got more than one cells. So yes, now we will just move back to the granule. So yeah, next we will move on to the next slide, and here you can just look at these pictures. So in these pictures we can see what are algae, how do protozoa look like, and fungus and bacteria. So it's a greenish kind of structure. So this is known as algae, and protozoa looks like this. You can look at this and make out. And fungus will look like this, and this bacteria will look like. तो idea हो गया होगा. Using a micro we can see algae, and the algae will look like this, protozoa will look like this, fungus will look like so, and bacteria will look like this. So I think now you are quite clear about the microorganisms, the types of microorganisms. So अब हम चलते हैं next section की तरफ. So इस section में हम ये जानेंगे what are virus. So the virus are microscopic organisms, and they reproduce inside the cells of a living organism. So जो वायरस होता है वो दे जस्ट रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स. सो मान लीजिए कोई भी वायरस लग गया है, जैसे कोरोना वायरस देखा था आपने. तो कोरोना वायरस जो जस्ट रिसेंटली हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, एंड इट वाज स्प्रेडिंग. सो वो काफ़ी स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हो गए. सो उस वायरस को हम कह सकते हैं it's a microscopic organism, and it reproduce inside the cells of a living organism. So because of virus आप वो reproduce करता है cells में, तो धीरे धीरे क्या होता है, किसी भी ह्यूमन के अंदर अगर कोई भी टाइप का वायरस है तो रिप्रोड्यूस उसमें करने की वजह से क्या होता है, बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट पर्सन विल बिकम मोर सिक, एंड ड्यू टू दिस वी have already seen many deaths. So we can take a good example of coronavirus over here, and now we will just move on to the third sentence. So they are responsible for various kinds of diseases like chickenpox and polio. So जिस तरीके से अभी हमने second sentence में पढ़ा कि they reproduce inside the cells. So cells के अंदर वो reproduce करते हैं. So उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वायरस है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं. तो जैसे आपने चिकन पॉक्स देखा, चिकन पॉक्स क्या है, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये भी फैलती है. सो चिकन पॉक्स हो गया, and then polio, these are called microscopic organisms, and they cause cold and influenza too. So because of this we can even get cold. जैसे कोरोना वायरस की वजह से हमें क्या हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, कोल्ड भी हो रहा था, एंड काफ़ी सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी बिकॉज ऑफ दैट वायरस. सो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि वायरस क्या होता है. एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सो इसमें हम देखेंगे हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक कहाँ रहते हैं वो, उनका घर क्या है. तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप एंशियस होंगे ये जानने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं. So let's get started with this. So they can survive in ice cold as well as hot environment. So there are types of microorganisms, or even you can call it as virus. So
they survive in cold also and in hot environments also, depending upon the type of microorganism. So they also live inside the body of animal and humans. So जैसे कि हमने पढ़ा, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स की बॉडी में भी सर्वाइव करते हैं एंड ह्यूमंस की बॉडी में भी होते हैं, एंड दे कैन easily reside in marshy lands and deserts. सो मार्शी लैंड्स में भी एंड डेजर्ट्स में भी सर्वाइव करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू दिस. सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इट्स अ हैंड, एंड हम यहाँ पे ये देख रहे हैं लेंस से हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर मतलब हमारे हाथों में कितने कीटाणु हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ऐसे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड आउट बिकॉज इट लुक्स plain, that means nothing is there, but आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे you'll get to know कि there are number of microorganism on your hand. That is why we should always wash our hands by soap and then we should eat our food. Okay, so let's move on to the next slide. Okay, तो यहाँ पे अब हम ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं. अब तक तो हमने ये जाना कि वायरस से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया एंड देन चिकन पॉक्स, पोलियो, देयर आर नंबर ऑफ डिजीज़, टाइफाइड, देयर आर मैनी डिजीज़ that caused due to microorganism. And now we are going to learn how a microorganism will be friend of us. हमारा दोस्त कैसे होगा? We will learn about this. So they are used in the preparation of food like bread, cakes, curd, cheese, pickles, etc. So कुछ ऐसे फूड हैं जिसके प्रेपरेशन में कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ. So lactobacillus bacteria helps in the formation of curd. So curd कैसे बनता है? There's a bacteria named as lactobacillus. That bacteria helps in the formation of the curd. So curd is actually very beneficial for the health. And now we will move on to the second sentence. So in the second one we have bacteria decomposes the organic waste into reusable substances. So bacteria, it decomposes the organic waste into reusable substances, and in medicines they are used to make antibiotics like streptomycin, tetracycline, and erythromycin made from fungi and bacteria. So there are some medicines, they use these bacteria to make some medicines such as antibiotics. आपने antibiotics का नाम भी सुना होगा, जैसे कि आपको फीवर हो गया, काफ़ी बुखार है, थ्रोट पेन है, तो हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है. So yeah, so that's a good bacteria and it's really helpful for us. Now we will move on to this, and it's made up of fungi and bacteria which can stop the growth of disease causing microbes. So अगर हम इन टैबलेट्स को खाते हैं, इन मेडिसिन्स को खाते हैं, तो हमारा जो डिजीज़ है वो ग्रो नहीं करेगा, लाइक इट विल स्टॉप. एंड कहते हैं ना, जब कुछ भी लाइक बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड द doctor gives some medicines, and after some time you feel better because of these medicines. And in these medicines they have used some bacteria that is named as fungi. Now let's move on to the next. So microorganism as a friend. So the environment cleaning microbes are called biological nitrogen fixers. So हमारे environment को जो clean करते हैं microbes, उन्हें हम कहते हैं biological nitrogen fixers. So these are very helpful for us. And now in agriculture, microbes are used to fix nitrogen for increasing soil fertility. So soil की fertility को increase करने के लिए
एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए. एंड नाउ नेक्स्ट, conversion of sugar to alcohol is known as fermentation. So कोई भी शुगर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल के फॉर्म में, इट्स नोन एज fermentation. And during fermentation there are many microorganisms that are present in the product. For example, while making idli or sambar, idli और डोसा, सो व्हाट हैपेंस, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होता है वहाँ पे भी. आप इडली और डोसा बनाने जाते हैं तो यू फर्मेंट दैट बैटर एंड नेक्स्ट डे यू प्रिपेयर दैट. सो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो माइक्रोब्स होते हैं लाइक present in the idli or dosha batter that are good for our health. So that's the reason some microorganisms are really beneficial for our health. Now, we'll move on to this. The bacteria yeast is used in alcohol production. So यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया का नाम सुना हमने जिसका नाम है yeast, and it is used in alcohol production. So alcohol के को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए yeast का इस्तेमाल किया जाता है. and it grows in the natural sugars of barley and wheat, fruit juices and rice. so ये जो yeast होता है, it is present in sugars of barley, wheat, fruit juices and rice. so यहाँ तो हमने ये देखा कि microorganism as a friend. and now we will move on to the vaccine. so जाहिर सी बात है, if you get affected by something, so आपने तो काफ़ी सुना होगा इन 2 सालों में कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए. क्यों लेते हैं हम वैक्सीन? वैक्सीन का क्यों इस्तेमाल होता है? वैक्सीन का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि जो डिसीज़ है जो फैल रही है उससे आप बच सके. So the vaccine is a medical preparation of certain biological agents that provides immunity to the body. So जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होगी तो कोई भी टाइप का बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी पे अटैक नहीं करेगा. बिकॉज ऑफ दैट वी टेक वैक्सीन. So I hope you are clear till here, like why we use vaccine. And now let's move on to the next. So next sentence में है, diseases like hepatitis, cholera, tuberculosis can be prevented by vaccination. so आपका proper vaccination होगा तो कुछ diseases ऐसे होते हैं जो आपको affect नहीं करते, such as hepatitis, cholera, TB को tuberculosis कहते हैं. एंड इवन पोलियो के भी काफ़ी वैक्सीन्स होते हैं जो हम छोटे जब रहते हैं तब लिए जाते हैं ताकि हमें पोलियो ना हो. सो व्हेन वी फॉल इल आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट दैट डिजीज. सो वैक्सीन वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर. तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है इट प्रोड्यूसेस सम एंटीबॉडीज़ ताकि वो लड़ सके उस डिसीज़ के लिए. सो उस टाइम पे जो आपने जो वैक्सीन ली है वो बहुत वर्क करती है. नाउ वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, देयर इज वन मोर sentence left. So the antibodies remain in our body and protect us from the particular disease. So जैसे कि मैंने कहा कि वैक्सीन लगाने से चाहे आपको बीमारी कभी भी हो तो वो जो वैक्सीन का जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. एंड एट द टाइम व्हेन यू गेट ill or fall ill, that time it will help you from fighting with the disease. So I hope I'm clear over here. So if there's any doubt you can just comment. So now there are some practice questions that we are going to do. So you can take a snap of this, the snap of this, and let's read the question first. So what are microorganisms? Can you give some examples? Yes, we have learned this, so I hope you can write this. And how many kinds of organisms
exist. So how many kinds of microorganisms are there? You can just write over there. And what is a virus? And you can give some examples of some diseases that caused due to virus. And what are the environments in which a microbes can live and grow? So you can just take a picture of this, and yes, you can do this as your homework. Let's move on to the next slide. So this is second practice question, second slide of the practice question, so you can take a snap of this also. So जो भी है वो हमने पढ़ चुका है, तो it's really easy for you to give the answers on your own. There's no need to even read the books. So we have completed, and there's one more topic that is left, so I'm going to finish it now. So give me few seconds. Okay. Okay, so yes, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा harmful microorganism, and we will learn about food preservation and nitrogen fixation and cycle. So okay, so let's get started. So अब हम just there's one more topic to cover. So we will cover this harmful microorganism and food preservation, and next in the next upcoming session we will finish this nitrogen fixation cycle. Okay, so you can just make a note in the notebook so that whenever you come to the class you will have an idea that what you have done in today's session. Okay, so let's move to this topic. So कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अब इसमें देखेंगे. तो आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सर्वाइव करते हैं, जिससे हमें बचना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. Okay, so there are some microbes which cause diseases in plants, animals, and humans, so they are pathogens. So there are some microbes, कुछ microbes हैं जो आपके disease cause करते हैं plant और animal में और even humans में भी. इन्हें हम कहते हैं pathogens. So एक harmful microorganism का नाम अभी हमने पढ़ा, वो है pathogens. Now they can enter their host through following. So they can enter any body or any, like into any plant or into any animals through food, water, air, physical contact with an infected person. So जैसे कि खाने में भी बैक्टीरिया होता है, if you eat that you'll get sick. Water maybe some bacteria are there, due to that you'll get sick.
एयर में भी जो हम ब्रीथ करते हैं, जैसे कि कोरोना, कोरोना का नाम मैंने बहुत बार ले चुका है, तो कोरोना में भी आप मास्क क्यों लगाते थे? वाई? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इफ़ ही स्नीजेस, व्हाट हैपन्स, वो जो स्नीज करता है उसके जो बैक्टीरिया निकलते हैं स्नीजिंग के टाइम पे, वो चारों ओर आपके सराउंडिंग में फैल जाते हैं, एंड ड्यू टू विच व्हेन यू टेक अ ब्रीथ इट विल get into yours body. So that is the reason air. Now, physical contact with an infected person. So there are some diseases where you have to like make like you have to like not touch the person in order to avoid the disease. Okay, so now disease causes caused by such microbes are called communicable diseases. So इन diseases को कहते हैं communicable diseases because किसी के थ्रू ये हमें हो रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज कम्युनिकेबल, मतलब फैलने वाली डिजीज़. तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है कॉलरा, फिर कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. सो ये सारे डिसीज़ेस जिसके मैंने नाम लिए हैं, ये हैं हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. ये हमारे डिजीज़ेस स्प्रेड होते हैं from one person to the other person, and be it animal or anything. So it just spreads. So virus spreads in the air from a person suffering from common cold, and it can be transmitted to a healthy person while breathing. So जैसे मैंने कहा कि जो वायरस है वो एयर में स्प्रेड होता है, एंड लाइक कोई भी अच्छा हेल्दी पर्सन है एंड इफ़ ही ब्रीथ्स, और वो जो वायरस है अगर वहाँ पे उस एयर में फैला हुआ है एंड व्हेन ही ब्रीथ्स, सो उसे भी वो बीमारी हो जाती है. सो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यस, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं देयर आर टू पिक्चर्स. Here's a small girl, there's a teacher. So small girl is asking how can communicable disease be prevented? तो communicable disease से हम कैसे बच सकते हैं? So let's see what teacher says. So she says we should always cover our nose and mouth with a handkerchief whenever anybody sneezes or coughs in our vicinity. So yes, so either you can use the handkerchief, but nowadays we are using mask, so there's no need of handkerchief. So whenever you remove your mask you can use the handkerchief if you see anybody sneezing near your surrounding. Okay, so in that way you can prevent yourself from any communicable disease. So if I talk in हिंदी, तो communicable disease से कैसे बचा जा सकता है? तो आप मास्क यूज़ कर सकते हैं या तो फिर हैंकरचिफ यूज़ कर सकते हैं. So whenever you are using handkerchief, so you have to do one thing. You have to always clean your handkerchief daily, because उसमें भी काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं while we use it, and again if we use the same handkerchief the next day we can even get diseases from that also. So let's move to the next slide. So कुछ और ways of transmission. So there are some more ways of transmission of the disease. So some insects are carriers of diseases, for example housefly. So मक्खियों को आपने काफ़ी देखा होगा, तो किसी भी चीज़ पे मक्खियाँ लग जाती हैं, एंड देन व्हेन वी ट्राई टू ईट दैट थिंग, तो उसका जो बैक्टीरिया है उस फूड में चला जाता है, एंड व्हेन वी ईट इट वी विल गेट द डिजीज़. So that sits on garbage dumps and then on uncovered food, thereby spreading diseases. So आपने देखा होगा फ्लाइज क्या करते हैं, हाउस फ्लाई, वो कभी कभी काऊ डंग के ऊपर जाते हैं एंड देन बाहर गार्बेज रखा है वहाँ पे जाते हैं, नालियों में रहते हैं, एंड दे जस्ट लाइक अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ जाते हैं, एंड वो अनकवर्ड फूड जब हम खाते हैं तो हमें डिजीज़ हो सकती है.
एक्चुअली होती है डिजीजेस, हो नहीं सकती है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ एंड वी मे गेट सिक. So now, the female Anopheles is the carrier of the parasite that causes malaria. So the female Anopheles. So आपने मच्छरों को देखा होगा. So the female Anopheles होती हैं. It carries the parasite that causes the malaria, and if it like अगर उसने आपको काट लिया किसी भी मच्छर ने, जो किसी भी नहीं, फीमेल एनोफिल्स ने, सो उससे आपको मलेरिया हो सकता है, बिकॉज इट कैरीज द पैरासाइट दैट इज that causes malaria. Now, the female eats is the carrier of dengue virus. So जो female eats होती हैं वो डेंगू वायरस को कैरी करती हैं. तो this small little boy is telling then how to save ourselves from such carriers. So stagnant water is the breeding ground of mosquitoes, so we should not let water accumulate anywhere. So इन सब डिसीज़ेस से बचने के लिए का एक ही तरीका है, कहीं भी किसी भी गड्ढे में पानी जमा ना होने दे. अगर पानी जमा होगा वहाँ पे तो मच्छर मक्खी सब आएंगे वहाँ पे. सो वो मच्छर वहाँ पे ब्रीड करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मे कम टू योर हाउस एंड देन इट, उसके बाद तो आपको पता है. सो हम इस तरीके से बच सकते हैं. Now, diseases and their causes. So there are some diseases that are caused through air, that is measles. So measles are caused by virus, and tuberculosis is caused by bacteria, and chickenpox is again caused by virus. Polio is also caused by virus. So prevention क्या है इसका? So prevention यही है, you can avoid physical contacts with the patient and his belongings or her belongings. Whenever you get to know somebody has got measles, tuberculosis, chickenpox and polio, you can stay away from that person till he becomes fit or fine. Now, और वाटर से जो डिजीज़ कॉज होती है वो है हमारे कॉलेरा. So it is caused due to bacteria. Typhoid is caused by bacteria and hepatitis B is caused by virus. So virus से आपका क्या होता है? Hepatitis B होता है. And now, prevention क्या है इसका? Proper vaccination, maintaining proper hygiene, drinking boiled water. कभी भी हमें boiled water पीना चाहिए, but boiled water doesn't mean you have to drink boiling water. You have to boil that water and set it for some time, let it cool for some time and then you can use it. So I hope I am clear over here. तो next चलते हैं हम. For hepatitis B, major prevention method are vaccination and drinking boiled water. So if any person who is having hepatitis B, he or she can prevent himself or herself by proper vaccination, and if he or she drinks boiled water he can prevent the disease. So, and then diseases and their causes. So then what about malaria and dengue? How can we prevent them? So malaria is caused by a protozoa and dengue is caused by a virus. So their carriers are the female mosquitoes, anopheles and eats respectively. So मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं वो तो हमने पढ़ लिया है. वाटर को कहीं पर भी एक्यूमुलेट ना होने दें, एंड वी शुड नो which type of protozoa that causes the virus, causes the disease. So it is female mosquitoes, anopheles and AIDS, female AIDS. And now, preventive measures are using mosquito nets. So mosquito के nets आते हैं market में, you can just purchase and use it, and removing stagnant water. So कहीं पे भी पानी, कहीं पे भी ठहरा हुआ पानी है, you just need to clean that.
and keeping surroundings clean and dry. So you need to keep the surroundings very clean and dry in order to prevent yourself from malaria and dengue. So I hope I'm clear over here. Now, so there's a last topic that we are going to cover now. So disease caused by microbes in plants and animals. So animals may foot and mouth disease is in cattle caused by virus, and anthrax is caused by bacteria. So now we have come to animals. So animals के भी कुछ diseases होते हैं. फुट और माउथ का डिजीज़ होता है जो वायरस से होता है, और एंथ्रैक्स जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है. सो प्लांट्स का अब हम डिजीज़ देखेंगे. प्लांट्स के कौन से डिजीज़ होते हैं. सो डिजीज़ेस reduce the yield of crops and prevention requires application of chemicals. So वो क्या क्रॉप्स को अच्छे से उगने नहीं देते हैं, तो due to that disease application of some chemicals are required to prevent any kind of like जैसे कि आपके क्रॉप्स में कीड़े लग गए, इन सब से बचने के लिए. So citrus canker caused by bacteria, mode of transmission is air. So these are the bacteria that causes plant diseases. Rust of wheat, it is caused by a fungi and its mode of transmission is air. And yellow vein is caused by virus and its mode of transmission is insect. So insect से भी हमारा plant harm हो सकता है, and उसका नाम है yellow vein. So yes, so यहाँ तक हमने पढ़ लिया. What are microorganisms, where do microorganisms live, and microorganism as friend and harmful microorganism कौन से होते हैं. We have learnt about the prevention and what are the diseases caused by some bacteria and viruses. And next, तो मैं यहाँ पे conclude करती हूँ. अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में. सो यस, so I am stopping till here, and I will just, there's one information. If you liked the class, please do subscribe to the channel and do like the page, do like the video. And yes, you can just, there's one information, you can just click on Justtutors, and from Justtutors you can avail all the benefits of Justtutors. We have got free study material packages, and we have test your knowledge and worksheets, and we have our courses that are maths, English and science. So you can take any package of your choice, and we have got free study materials that includes worksheets, and we have got US curriculum also, IGCSE, CBSE and ICSE syllabus. You will get exemplar solution also, and here you will also get textbook solution, and some video lessons are also there. You can just explore all these for your benefit, and you can even test your knowledge by just opting any subject and any particular lesson you want to test your knowledge on. So you can even chat with us through clicking on this, and by clicking on this you can just go to the free trial class. So that's all for today. Have a good day.